Hello students, hope you will all utilize your quarantine fruitfully and have no pressure to complete your syllabus, as here I am for you to help you or to complete your syllabus. Now today we are going to do chapter Graphical Representation. Graphical representation is जब हमारे पास स्टैटिस्टिकल डाटा होता है उसको हम डायग्राम और चार्ट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस। जैसे हमने पहले किए हुए हैं सिंपल ग्राफ्स, बार ग्राफ्स, पाई चार्ट्स एट्सेट्रा। नाउ वी विल स्टडी 3 ग्राफ्स, दैट इज हिस्टोग्राम, frequency polygon, ogive. These 3 graphs are also called as graphs of frequency distribution. This lesson is taught in 2 videos or 2 lectures. First lecture contain histogram and frequency polygon, and another lecture contain ogive, that is commutative curve. Histogram. A histogram is 2D graphical, two-dimensional graphical representation of continuous frequency distribution. Continuous frequency distribution मतलब कि हमारे पास क्लास इंटरवल होएगी और फ्रीक्वेंसी होएगी, ठीक है। और कॉन्टीन्यूस क्लास, जैसे हम इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग। क्लास इंटरवल कैसी है हमारे पास? 0 to 8, 8 to 16, 16 to 24, 24 to 32, 32 to 40, and the frequency is given respectively. Now how to solve this? First of all, we have to draw the graph in the graph paper. Mark x-axis and y-axis. X-axis represent class interval and y-axis represent frequency distribution. Now mark the class interval in graph according to the numbers given. Here 0 to 8, 8 to 16. Then I will mark here 0, 8, 16, 24, 32, 40 and 48 according to the given class interval on the x-axis. Then frequency is given 6, 9, 12, 10, 5. So I draw it on the y-axis, that is 2, 4 with the difference of 2. I mark it on the y-axis. Now here we have in the question 0 to 8, 6. 6 we mark here, and continuously we have to draw the rectangles accordingly. Here 8 to 16 we have 9, so 9 will be here. We mark it like that. Draw the rectangle properly and with the use of scale. Then 16 to 24 we have 12. Draw the rectangle again. Then 24 to 34 we have 10. In respect of 10 you have to draw the rectangle. Then 32 to 40 we have 5, so we 32 to 40 we draw 5. Mark rectangle according. Here we get the histogram of this question. Hope you all will get it. Now move to the next question. Draw the histogram for following. Question is given class interval and frequency. Class interval is 11 to 20, 21 to 30. Here you can see that class interval is not continuous. The upper class of this interval is not same as the lower class of this interval. So this is called inclusive class interval. We have to change it into exclusive. How can we change this? Let's move to the solution. Class interval which is given. Now we draw class interval exclusive.
this here 11 is lower class and 20 is upper class. In lower class we have to subtract 0.5 and in upper class we have to add 0.5. 0.5 हम लोअर क्लास में से माइनस करेंगे. 11 माइनस 0.5 10.5 और अपर क्लास में हम 0.5 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20.5. सिमिलरली विद द अदर क्लास इंटरवल्स हम 21 में से 0.5 माइनस करेंगे वी गेट 20.5 और 30 में से 30 में ऐड करेंगे 0.5 वी गेट 30.5. Similarly 31 minus 0.5 and 40 plus 0.5 40 plus 40.5. Similarly we get whole class interval that is called exclusive class interval. Now you can see that their upper class and lower class are similar. These are similar. These have to similar for histogram, for drawing histogram or weather frequency polygon. For this also you have to draw graph where you mark x-axis and y-axis. On x-axis class interval is marked and on y-axis frequency is marked. One thing I want to explain here is here the class interval start from 10.5. So in graph we start like that because the graph is not start from 0 like the previous one. So we have to draw this line then mark it as 10.5. Let me show it in the graph. Here's the graph. Graph is not start from 0, so I draw this and then mark 10.5, 20.5, 30.5, 40.5 and so on up to 60.5 as our question demands. Now the frequency are drawn. We have in question we have frequency 5, 8, 13, 10, 16. So we draw with the difference of 2 up to 16 it is enough or you can extend it. Now mark it. From 10.5 in question we have 10.5 to 20.5 we have 5. So draw the rectangle. We have 5 here. 4 और 6 के बीच में होगा 5 तो यहाँ से हमने ये मार्क किया. Similarly we can draw the rectangle with 8 units. Now 13 units. 13 is situated in between the 12 and 14. Then 10, 40 to 40.5 to 50.5, 10 units are included, and 50.5 to 60.5, 16 units are included. So the histogram is ready. You can see and do the questions of histogram. I will give you the questions. These first question are all the 4 parts are same as this. Now here's this 4th question. How can we perform that 4th part? I will also give that example also. Now if you have a question like that, then class mark is given like that. There is no upper limit, no lower limit, क्योंकि अभी तक हम जो कर रहे थे 10 to 20 और 0 to 8 ऐसे क्वेश्चंस करे हमने. 8 to समथिंग, 10 to 20, 20 to आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे. बट यहाँ पे क्लास मार्क कैसी है 25, 35, 45, 55, 65 and the frequency is given. So for this question we have to make another class interval. How can we make it? In 2 consecutive class intervals, that is
25 और 35, इनके बीच में कितना गैप है? 10 का। जितना भी गैप आता है दो कंसेक्टिव क्लास मार्क के बीच में, वो हम लिखेंगे 10, उसको डिवाइड करेंगे 2 से, वी गेट 5. नाउ 5 इज subtracted from 25 and 5 is added in 25. Then we get 20 and 30. Here we get 20 and 30. From class mark we can make class interval. Here we get the class interval 20 to 30. Now 35 में से क्या करेंगे? 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो 30, 5 को ऐड किया तो 40. ऐसे ही 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70. सिमिलरली और क्वेश्चंस भी, अब इसका तो आप हिस्टोग्राम बना सकते हैं जैसे मैंने बाकी क्वेश्चंस का करवाया, क्योंकि हमारे पास क्लास इंटरवल है. क्लास इंटरवल को आप मार्क करोगे एक्स एक्सिस पे, फ्रीक्वेंसी को आप मार्क करोगे वाई एक्सिस पे और हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लोगे. अब वो आप ड्रॉ कर सकते हो क्योंकि हमने क्वेश्चंस करें. अगर ऐसे ही अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जहाँ पे क्लास मार्क आपको गिवन है और फ्रीक्वेंसी, देन आपको यहाँ पे देखोगे कि 12.5 दो कंसेक्टिव क्लास मार्क्स में कितना डिफरेंस है, मतलब 12.5 और 17.5 में कितना डिफरेंस है? 5. 5 डिवाइड बाय 2, 2.5. Then 2.5 will be subtracted from this 12.5 minus 2.5 to 12.5 में ही हम ऐड करेंगे 2.5. Then we get 12.5 में से 2.5 माइनस करते हैं तो 10. Then 12.5 में ऐड करते हैं 2.5 तो 15. तो 10 to 15 क्लास मार्क्स की फ्रीक्वेंसी 12. Similarly 17.5 में से 2.5 माइनस करो 15 and then add 20, 20 to 25, 25 to 20, 30. Similarly we get the class marks with the respective frequencies. Okay. अब आपके पास अगर क्वेश्चन आ जाता है ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है, हिस्टोग्राम की जगह आ जाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. सेम क्वेश्चन आ रहा है ऐसा ही, बस बोला है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करो. तो उसके लिए बाकी सब प्रोसेस सेम होगा. फर्स्ट स्टेप यही है कि अगर इंक्लूसिव है तो उसको एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल बनाना है. देन क्लास इंटरवल बनाने के लिए बाद उसको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है. टू ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन वी हैव टू फर्स्ट टू ड्रॉ हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम जैसे ही आपका ड्रॉ होता है उसके बाद आपने मिड पॉइंट्स, जो आपने रेक्टेंगल्स बनाए हैं हिस्टोग्राम में, उसके मिड पॉइंट्स को मार्क करना है. दीज आर द मिड पॉइंट्स. जो टॉप है उसके मिड पॉइंट, जैसे यहाँ पे 10.5 और 20.5, इसका मिड पॉइंट क्या होगा? ये होगा ना 5 यूनिट्स के बाद. देन सिमिलरली इसका मिड पॉइंट, then you have to mark them with the help of scale. You will mark them, join them, sorry. And last also you have to mark the midpoint, and with the help of scale you have to join this, and here we get the frequency polygon. So 2 graphical representations of frequency distribution is completed by this, that is histogram and frequency polygon. You can solve the questions related to this. If you get any problem, you can drop the comment that you have problem in this question. I will solve it for you. Thank you. Be sure, be grow.